starting for the practice set 3.1. Question number 1. Which of the following sequence are AP? If they are AP, find the common difference. So first one, it's find out the common difference. Now sequence is there 2, 4, 6, 8. Let's see how to find out of the common difference. Okay, now so first one, it's always represent of the T1 is equal to 2, T2 is equal to 4, and T3 is equal to 6, and T4 is equal to 8. सेकेंड वन फाइंड आउट द डिफरेंस. सो डिफरेंसेस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है D इज इक्वल टू T2 माइनस T1. व्हाट इज द T2? 4 माइनस 2 देन इज इक्वल टू 2. सो योर डिफरेंस इज 2. सेकेंड वन, डिफरेंस इज इक्वल टू T3 माइनस T2. व्हाट इज द T3? 6 माइनस 4 देन इज इक्वल टू T2. राइट, अगर आपके डिफरेंसेस कांस्टेंट आ रहे इट मीन्स दिस अ सीक्वेंस, this is a constant. Then difference is equal to T4 minus T3. T4 8 minus 6 then is equal to T2. So आपके constant आ रहे differences, तो हम statement लिखेंगे. So the difference, so therefore this difference between two consecutive terms so therefore D is equal to 2, which is constant. So therefore it is an AP, right? सेम एज इट इज हम सेकेंड वन फाइंड आउट करेंगे. सो सेकेंड वन अगेन सेम T1 इज इक्वल टू 2, T2 इज इक्वल टू 5/2 एंड T3 इज इक्वल टू 3 एंड T4 इज इक्वल टू 7/2. सो नेक्स्ट वन, गेट फाइंड आउट द डिफरेंस T2 माइनस T1. What is the T2? 5/2 and minus 2, right? Cross multiplication करेंगे, 2 2s are 4, then upon 2 is equal to 1/2. So your difference is equal to 1/2. Second one difference T3 minus T2. What is the T3? 3 minus 5/2. Again cross multiplication, 6 minus 5 then upon 2 is equal to 1/2. Your next difference. And last one, D is equal to T4 minus T3. What is the T4? T4 is 7/2 and T3 is equal to 3. Again 7/2 minus 3 2s are 6, 6 then upon 2. So 7 minus 6 is equal to 1/2. So again write the statement. So therefore the difference between two consecutive terms D is equal to 1/2. So therefore it is an AP. It's very easy. So let's see next one. Now third one. So T1 is equal to minus 10, T2 is equal to minus 6, T3 is equal to minus 2 and T4 is equal to 2. So first one differences find out करेंगे, T2 minus T1, then T2 is equal to minus 6 and minus then minus 10, right? So minus 6 minus get plus 10 is equal to 4. Your difference is 4. Second one difference, D is equal to T3 minus T2. T3 is equal to minus 2 and T2 is equal to minus 6. Again minus 2 then plus 6 is equal to plus 4. Now next one differences. So difference is equal to T4 minus T3. What is the T4? 2 then minus and minus 2. So 2 plus 2 is equal to 4. Your difference is equal to 4. So therefore the difference between two consecutive terms
between two consecutive terms is constant. So difference is equal to 4. So therefore 8 is an AP. Fourth one देखेंगे हम. Okay, now so fourth one, T1 is equal to 0.3, T2 is equal to 0.33 and T3 is equal to 0.0333. So again differences find out करेंगे. T2 minus T1. What is the T2? 0.33 then minus 0.3 is equal to क्या आ जाएंगे 0.33 and 0.3. तो obviously 0.03 आएंगे, राइट. सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो ये आपके 0 सॉरी सो डिफरेंसेस क्या आएंगे 0.03, राइट. सेकेंड वन डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे. सो D इज इक्वल टू T3 माइनस T2. व्हाट इज द T3? 0.333 एंड माइनस 0.33. तो ऑब्वियसली 0.003 आ जाएंगे, राइट. तो दोनों डिफरेंसेस देखिए, बोथ आर द इट मीन्स लाइक डिफरेंट. सो क्या लिखेंगे? देयरफॉर the difference between two consecutive terms is not constant, right, because दोनों क्या हुए different आए हैं. So therefore this sequence is not an AP, right. फिफ्थ वन देखेंगे हम. सो हमारे फिफ्थ वन T1 इज इक्वल टू 0, T2 इज इक्वल टू -4, T3 इज इक्वल टू -8 एंड T4 इज इक्वल टू -12. अगेन करेंगे डिफरेंस इज इक्वल टू T2 माइनस T1 देन -4 एंड -0 इज इक्वल टू -4. फर्स्ट वन डिफरेंस आ गए आपके. सेकेंड वन डिफरेंस क्या आ जाएंगे? T3 माइनस T2. व्हाट इज द T3? -8 एंड माइनस देन -4. So minus 8 and minus get positive. 4 is equal to -4. Next one difference निकालेंगे. So difference is equal to T4 minus T3. What is the T4? -12 then -8. So -12 plus 8 then is equal to -4. So differences हमारे क्या आ गए? Constant आ गए. Let's see, write the statement. So therefore the difference between two consecutive terms is constant. So D is equal to -4. So therefore 8 is an AP. Now second one. Okay, 6 1 क्या आ जाएंगे? T1 is equal to -1/5, T2 -1/5 and T3 -1/5. Difference is T2 minus T1, -1/5 then minus and -1/5. 1/5 plus 1/5 is equal to 0. ये आपके फर्स्ट वन डिफरेंस आ गए. सेकेंड वन डिफरेंस निकालेंगे. सो T3 माइनस T2 -1/5 एंड माइनस देन -1/5 is equal to 1/5 minus get positive and 1/5. So both are the similar. So plus minus get 0. So difference is equal to 0. So क्या लिखेंगे इधर? Therefore the difference between
consecutive terms is constant. D is equal to क्या आ जाएंगे 0. So therefore 8 is an AP. So इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे. So question number 7th one. Again T1 is equal to 3. T2 is equal to 3 plus root 2. T3 is equal to 3 plus 2 root 2. And T4 is equal to 3 plus 3 root 2. So first one. So difference is equal to T2 minus T1. What is the T2? 3 plus root 2 minus and T1 is equal to 3. So ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके डिफरेंस आ जाएंगे रूट 2. राइट. सेकेंड वन डिफरेंस निकालेंगे T3 minus T2. What is the T3? 3 plus 2 root 2 and minus T2 is equal to 3 plus root 2. ब्रैकेट ओपन करेंगे. सो 3 plus 2 root 2 minus 3 then minus root 2. सो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे. 2 minus 1 is equal to 1. नेक्स्ट वन डिफरेंसेस क्या आ जाएंगे? T4 minus T3. What is the T4? So T4 आपके आ जाएंगे 3 plus 3 root 2, 3 plus 3 root 2 and minus T3 आपके आ जाएंगे 3 plus 2 root 2. ब्रैकेट ओपन करेंगे. सो 3 plus 3 root 2 minus 3 then minus 2 root 2. So minus plus get cancelled. 3 minus 2 is equal to root 2. So differences आपके क्या आ गए? कांस्टेंट. So therefore the common difference, so the difference between two consecutive terms is constant. D is equal to under root 2. It is an AP. So the difference between two consecutive terms is a constant. D is equal to 5. It is an AP. So next वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. जय हिंद दोस्तों.